Friends, welcome to e-learning. We are going with chapter 5 poverty, and this is the 7th lecture. We have already completed indicators of poverty in 3 lectures, that is lecture 4, 5 and 6, and today we are going to start with our next topic, that is causes of poverty. मतलब poverty कैसे होता है, क्यों होता है, कौन से रीजंस हमारे यहाँ पे पॉवर्टी इतना ज़्यादा क्यों है और कौन से रीजंस है, अलग अलग तरह के रीजंस है जो हम ये लेक्चर में आज सीखेंगे. So let us study about, or let us look for few points which are been there. Now these are the 5 points which we find, that is the reasons. First is historical reasons. by हमारे हिस्ट्री के हिसाब से, पिछले बैकग्राउंड के हिसाब से हमारी कंट्री में क्या हुआ था, इसके वजह से हम पॉवर्टी में है. सेकेंड इज द कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी. व्हाट आर द कॉजेज फॉर रूरल एरियाज. ज़्यादातर हमारे यहाँ पे रूरल, देयर इज 70% ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, एंड हाउ there is a, we can say, poverty has been going on. Then after economical factors, we can say economic factors also. economic factor मतलब पैसे की वजह से, from financially why we are suffering and what are the factors which are being affecting. Then after the fourth one comes the social reasons. social reasons हमारा जो cultural reasons है वो अंदर आ जाएगा. socially, culturally, how we are being we can say becoming very poor and poor, or we are coming under the poverty. Then lastly the other reasons which are been affecting. So all these points, all these are the main points. Actually, if we look out, this is a very big topic again, like indicators. We have again sub points in this particular मेन पॉइंट्स. सो हिस्ट्रिकल रीजंस के अंदर तो पूरा हिस्ट्री के बारे में होगा, उसके अंदर सब पॉइंट्स नहीं है, लेकिन कॉजेज ऑफ रूरल पॉवर्टी की बात करें, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल रीजंस एंड अदर रीजंस, सो ये सब के अंदर सब पॉइंट्स हैं. सो ज़्यादातर वी फाइंड दैट इकोनॉमिक फैक्टर विच हैव मोर देन 4 पॉइंट्स, नियरली 5 पॉइंट्स है, लेकिन बाकी सब में 2 या 3 पॉइंट्स ही है. दैट वी हैव टू गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल द फैक्टर्स, और वी कैन से ऑल द थिंग्स which are causing us poverty in the country. So let's start with the first one, that is today in this lecture I am going to cover, that is historical reasons. So let us start with historical reasons. Now when we talk about historical reasons, history की बात करें तो हमारा इंडिया जब as before independence we are under the rule of Britishers, and Britishers से पहले 2000 we can say in the 17th century, कौन सी 1700 साल में 17th century, we were very good, very much developed, very much urbanized, we were very much systematic, everything was very well which was been going on that time. सो कंपैरेटिवली अभी की बात करें तो उससे ज़्यादा अच्छे से रहते थे, अच्छे से कमाते थे, अच्छे से अर्बनाइज थे, वी वर वेरी मच हाइजीन, एवरीथिंग वॉज बीन देयर दैट टाइम if you look out as per the history. So this is what the content has been telling up here in this particular thing, and we find that as in fact also we find that their living style was far much better than us, though there was a lacking of technology, or there was just started of industrialization, but still we find that that was the time where we were having good much urbanization that time compared to now. So let's start with this particular here in this point. If I want to say here, that time the business in India was, what was the trading activity which was being done? Mostly the trading activity was being done from India, and India was the major supplier of different types of goods. We have studied in 8th standard, we can say 10th 11th standard में हम पढ़े थे इसके बारे में कि इंडिया के अंदर से हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वी हैव सीन दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर देखा था कि भाई कहाँ से पहले कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से हमारा एग्रीकल्चर कंट्री था हुआ, वेयर इट वॉज बिन रीच, इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट, we can say 25% of the world supply, it was been there, everything was been there. So यहाँ पे India was a major distributor of the, we can say, textile, as well as we can say silk, spices and paddy. So this all things were been exported, as well as we find that cotton was also been, cotton textile was also been exported there. Then after you find that the next point says that after the entry in 17th century के अंदर ये सब था, लेकिन जब in 17th century you find 1757 when the Britishers came, then after Frenches, Dutches, all these ये सब जो लोग आए हमारे यहाँ पे अटैक करने, हमारे यहाँ पे कब्जा करने के लिए, because of our richness, सो प्रॉस्पेरिटी एंड रिचनेस देख के ये सब लोग यहाँ से मिडल ईस्ट वाले लोग यहाँ पे आ गए. तो व्हाट हैपन, दे स्टार्टेड एक्सप्लोर, दे स्टार्टेड रूलिंग अवर डिफरेंट टेरिटरीज, किंगडम, इट वाज अ किंगडम, देयर वाज नो स्टेट, नो गवर्नमेंट, बट इट वाज अ किंगडम रूलिंग वाज बीन देयर. सो दे स्टार्टेड देयर ओन ऑफिशियल princes were been there who started making their colonies. So the colonial exploitation was been done that time, and because of that we started suffering. Indian agriculture and industrial situation was been deteriorated means what, वो वर्सन हो गया, वर्स्ट हो गया, बहुत बिगड़ गया. सो
उन लोग के आने की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर मेनली बिगड़ गया. सो दिस वाज द थिंग विच वाज बीन देयर. लेकिन कंपेयर करें अगर उस टाइम उससे पहले, इन लोग के आने से पहले वी वर वेरी मच अर्बनाइज, बट बिकॉज ऑफ देयर दे केम इन इंडिया एंड उसके आने की वजह से हमारे यहाँ पे पूरा वर्सन हो गया कंपेयर टू अर्लियर इन 17th century. दे केम इन 1750s and if we have read that particular thing. Now again we find that due to ब्रिटिश रूल की वजह से क्या हुआ कि हमारा सबसे ज़्यादा अफेक्ट किस पे गया, बिकॉज इंडिया वाज द प्राइमरी और बेसिकली फर्स्ट एग्रीकल्चर कंट्री, और वी कैन से एग्रीकल्चर कंट्री ही था पहले. मेन सोर्स ऑफ इनकम दैट वाज 70 to 80% ऑफ इनकम दैट टाइम इन 17 वी फाइंड दैट 17th century इट वाज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर. दो दे वर मच getting more money from import export also, but the main thing which was they were doing, that is agriculture sector. So that was been there, but here you find that they suffered due to different reasons under the British rule for agriculture sector. Most of the farmers were been there. Why? The first reason, there are two reasons. First hand you find that agriculture was based on monsoon. एक तो पहली चीज़ monsoon पे था. Yes, that time the monsoon also, still today you find that India has a climate, unconditional climate, and you find that every agriculture country depends on monsoon, because monsoon, the rain, when the rain will fall, that time the harvesting or the crops will grow definitely well. So it was depending on the monsoon first of all. Second, ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा फॉर देयर इरीगेशन पर्पस, फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विच दे वर शोइंग फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इरीगेशन सेक्टर. Britishers have not taken into consideration and they have not shown any kind of interest. So you find that particular thing. Then you find that on the other hand, on the second hand, एक साइड पे मानसून था, दूसरी साइड पे क्या हुआ, यू फाइंड दैट देयर वाज अ ड्राउट. व्हाट वाज ड्राउट? ड्राउट इज नथिंग, वी कैन से फेमाइंस. फेमाइंस का मतलब क्या सर? अभी फेमाइंस मतलब जहाँ पे बारिश नहीं गिरती 1-2 साल तक, तो 1 साल तक भी अगर पानी मीन्स बारिश ना गिरे तो उसको बोलेंगे ड्राउट. So that is what which was been happening up. Then after you find that ज़मींदारी system. What is ज़मींदारी system? ज़मींदारी system का मतलब क्या है कि भाई जो फार्मर्स जिसके पास खुद की ज़मीन ना हो, वो दूसरे ज़मींदार, द पर्सन हु इज़ वेल्दी एंड रिच एंड दोज आर हैविंग मच अमाउंट ऑफ लैंड, द पूर फार्मर्स ट्राई टू गो आस्क फॉर देम टू ऑन रेंट. सो दैट इज़ कॉल्ड टेनेंसी सिस्टम. टेनेंसी मतलब वो लोग ज़मींदार के पास ले लेंगे अपनी, उन लोग की लैंड ले लेंगे, और ऑन द we can say on yearly basis they will pay tax as well as interest to them. So with the amount of interest rent पेंगे. tenancy मतलब rent, जो हर बार उन लोग रेंट देते हैं. so rent system was been there. So and that also you find that they were exploiting the, we can say under the British rule. हमने देखा था कि वो लोग एक्सप्लोइट करते हैं. एक्सप्लोइट कैसे करते हैं? बिकॉज दे विल चार्ज हाई अमाउंट ऑफ we can say rent and interest for the poor farmer for growing the particular agriculture. So उसके अंदर वो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाते, एंड बिकॉज ऑफ दैट फार्मर वर एक्सप्लॉइटेड एंड देयर कंडीशन डिटोरेटेड. और इकोनॉमिक फार्म मतलब फार्मर की कंडीशन जो पहले इतनी अच्छी थी वो पूरी बिगड़ गई बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश रूल. अंडर द ब्रिटिश रूल ज़मींदार ने बहुत अच्छे से कमाया, बहुत अच्छे से लूटा. किसको? फार्मर्स को. नाउ देन आफ्टर यू फाइंड दैट द प्रेशर ऑफ डेप्ट. यस, क्योंकि वो लोग ज़्यादा लोन, ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ लोन दे रहे थे, ये सब हो रहा था, तो क्या हो गया उन लोग के ऊपर डेप्ट मतलब वी कैन से देव बढ़ गया. तो बोरिंग वॉज बीन मोर एंड द बोरिंग्स वॉज नॉट एबल टू पे बाय द फार्मर बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है. लेकिन दूसरी जगह पे ब्रिटिशर्स क्या करते थे? उन लोग को उनकी चीज़ यहाँ पे बेचने नहीं देते थे जो भाव पे उन लोग को बेचना है. दे वर मेकिंग देम टू exploit. Why exploit? How exploit? They are making them to reduce the money of that particular product. and वो सब चीज़ एग्रीकल्चर जो हमारे यहाँ पे इंडिगो था, we can say cotton, everything was been exported to the ब्रिटिश लैंड. और तो ब्रिटिश में जाके वहाँ पे मैनचेस्टर में वो लोग अपना इंडस्ट्रियल कॉटन टेक्सटाइल का मार्केट चलाते थे, और वही प्रोडक्ट वहाँ पे बना के यहाँ पे ला के हमको ही ज़्यादा भाव पे बेचते थे. सो दैट वाज द थिंग विच वाज द ब्रिटिशर्स वर डूइंग, एंड इन दैट पर्टिकुलर थिंग वी फाइंड दैट वी लॉस्ट आवर प्रेशियस जेम दैट इज़ इंडिगो. एंड देन आफ्टर यू फाइंड दैट कॉटन वगैरह यहाँ से लेके वहाँ पे बनता था, और वहाँ से लेके हमको यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह को जो भी चीज़ चाहिए कॉटन मटेरियल, इट्स बीन सोल्ड टू अस विद हायर रेट ऑफ, एंड वहाँ से वो कमाते थे. सो पूर फार्मर्स आर बीन टोटली वी कैन से एक्सप्लॉइटेड. अगेन ज़मींदार के ऊपर डेप बन गया. अगेन उन लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलता था, प्रॉफिट इतना नहीं होता था, तो वो लोग कहाँ से? इंटरेस्ट ऑन लोन पे. तो वो लोन बढ़ते बढ़ते डेप बन गया, तो दे वर बीन वेरी मच
came to the exploitation point, and they were been dying out of hunger of this particular thing. So this was the thing where agriculture sector, the main source of income in India, was been totally we can say gone worsen. It was deteriorated by the Britishers, by the zamindars, by the money lenders, and by the big businessmen. So this was the thing which was been there, where poor farmer was totally exploited, and were because of that farmers started reducing their interest in agricultural land. This was the which was been happening. Then after cultivators started losing their land. Yes, जो फार्मर्स की खुद की लैंड थी, उन लोग को जो पाँव में वो उन लोग ग्रो करते थे क्रॉप्स, वो नहीं बेच पाते थे। तो उस टाइम पे क्या पड़ता था कि ब्रिटिशर्स वर मेकिंग सो मच अमाउंट ऑफ टैक्सेस, तो वो पे नहीं कर पाते। तो वो लोग ज़्यादातर ज़मींदार्स एंड वी कैन से ब्रिटिशर्स वर टेकिंग अवे, और वी कैन से दे आर स्नैचिंग अवे देयर लैंड by the farmers. So this is what which we find, the cultivators, those who are having their own land, that land was being taken up by the Britishers or the zamindars due to some or the fake documents things which was been there. And because of that हमारे यहाँ पे क्या हुआ, अमीर जो ज़मींदार थे, जो बड़े बिजनेसमैन थे, वो अमीर बनते गया ब्रिटिश रूल के अंदर, ब्रिटिशर्स भी कमाए, और जो पुअर फार्मर्स एंड द मिडिल क्लास पीपल वर सफरिंग एंड दे केम इनटू पॉवर्टी. सो दिस वाज द मेन पॉइंट वेयर वी हैव टू नो कि हम क्यों गरीब है थे, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, दैट इज ब्रिटिशर्स केम एंड दे स्टार्टेड रूलिंग एंड दे डिटोरेटेड द मेन सोर्स ऑफ इनकम अर्नर्स, दैट इज द पुअर फार्मर्स or the farmers who are earning that time very much well. They made them poor and they snatched away their land by taking different types of debt, interest on loan, by giving high rate of interest loan, and all that particular debt together became the reason where they started taking away the land of the, we can say, farmers when they are not able to pay their debts. And that's you find that the poverty has been increased. Again, if I see, यू फाइंड दैट ट्रेडिंग वॉज बिन स्टिल गोइंग ऑन. यहाँ से गुड्स वहाँ पे जाते थे, वहाँ से गुड्स यहाँ पे आते थे, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो चल रहा था, ट्रेडिंग एक्टिविटी तो चल रहा था. लेकिन व्हाट वाज द थिंग विच वॉज बिन हैपनिंग अप हियर ड्यू टू डिफरेंट ट्रेड पॉलिसी. हमारे इंडियन लोग वहाँ पे बेच नहीं सकते हायर रेट पे. हमारे यहाँ से जो भी चीज़ बनेगा, प्रोड्यूस होगा, एक्सपोर्ट होगा, वो जब भी ब्रिटिशर्स के यहाँ पे जाएगा तो वो बहुत कम नॉमिनल रेट पे जाएगा. अगेन क्या हुआ कि जो बिजनेसमैन ट्रेडर्स है जो एक्सपोर्ट करते थे पहले अच्छे से, ब्रिटिश रूल से पहले वो लोग अच्छे कमाते थे, इन लोग की वजह से बिगड़ गई. देयर इनकम हैज़ बीन गॉन डाउन. एंड यू फाइंड दैट ब्रिटिशर्स फॉलोड अ काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी विच बेनिफिटेड देम बाय ट्रेडिंग इन इंडिया. तो उन लोग ने क्या किया कि उन लोग के खुद के लिए, मतलब ब्रिटिशर्स को यहाँ से कुछ इंपोर्ट कराना तो फैसिलिटी अच्छी है, उन लोग के पास लो कॉस्ट में उसको मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलेगा. सो दे फॉर इम्पोर्टिंग गुड्स मतलब ब्रिटिशर्स को इंपोर्ट कराना इंडिया से, तो उन लोग को बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हमको बाहर से कुछ इंपोर्ट कराना तो हमको हायर चार्जेस पे बेचेंगे. देन यू फाइंड दैट इंडिया एक्सपोर्ट वर प्रोहिबिटेड क्यों भाई, हमको क्यों प्रोहिबिट किया. यू फाइंड दैट मैनी वेरियस गुड्स विच आर बीन देयर गिवन इन इंडिया, वहाँ पे टैक्स कंसेशन इंग्लैंड वाले गुड्स को मिलता, लेकिन हमको मिलता नहीं था. उन लोग को फ्रीडम, टैक्स कंसेशन, और वो उन लोग का प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे ज़बरदस्ती सेल होता था, और हमारे यहाँ से बाहर प्रोडक्ट्स नहीं जाता था. हमारी चीज़, जैसे मैंने पहले बोला, हमारे यहाँ पे इंडिको, कॉटन, टेक्सटाइल वगैरह था, लेनिन था, वो सब वूल वगैरह सब वो सब लेके गए एज अ रॉ मटेरियल विद अ वेरी लो कॉस्ट, एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दैट एंड सेलिंग अप हियर इन द इंडियन मार्केट विद वेरी कंसेशनल टैक्स. जो इंपोर्ट चार्जेस रहते थे वो बहुत कम कर दिए. वहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, यहाँ पे इंपोर्ट गिना था, और वो इंपोर्ट चार्जेस बहुत कम कर दिए फॉर देयर ओन गुड्स, नॉट फॉर अस. So this was been there. Then after you find that supply of goods which were been there, वो हमारे इंडिया में पूरी जगह पे कर दिया, मतलब हर जगह इंडिया के अंदर इंग्लैंड के गुड्स बिकने लगे. एंड वहाँ पे पहुँचाने के लिए, हर जगह पहुँचाने के लिए दे बिल्ट व्हाट, दैट इज़ नथिंग बट रेलवे. एंड दैट टाइम रेलवे वॉज बीन यूज वेरी मच, दो द रेलवे केम देयर इन इंडिया बिकॉज ऑफ देम, बट स्टिल इट वॉज बीन यूज मोस्टली बाय देम. देन यू फाइंड दैट हियर, because of this trade, tax policy, industrial policy, Britishers gained so much of surplus ज़्यादा प्रोडक्शन एंड सेल्स करके इंडिया के अंदर कमाल, बिकॉज वी फाइंड वी हैव द मोस्ट पॉपुलेट दैट टाइम देन द ब्रिटिशर्स. तो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा, हमारे यहाँ पे पैसा ज़्यादा, हमारे यहाँ पे सब कुछ ज़्यादा है, और उन लोग का सामान यहाँ पे आके बेच रहे थे, तो हमारे इंडियंस को ज़बरदस्ती परचेज करके लेना पड़ता था. तो अल्टीमेटली दे हैव इंक्रीज देयर वी कैन से प्रॉफिट मार्जिन due to that particular we can say their products.
and they started selling in India. Now again उन लोग ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया ब्रिटेन के अंदर. उन लोग का इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इनकम विच वॉज कमिंग फ्रॉम इंडिया दे मेड इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी स्पीडी अप इन दैट टाइम. और वो एरा में उन लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे से चला. एंड बिकॉज ऑफ इंडियन मार्केट वी फाइंड दैट वहाँ से जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे आके बिकते थे एंड इट वॉज बीन चार्ज एट अ हाई प्राइस्ड. Then you find that Indian trade business started losing their competition. Yes, because फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट वॉज रेस्ट्रिक्टेड. जो भी हमको एक्सपोर्ट करना वो रेस्ट्रिक्ट कर, लेकिन जो भी हमको नहीं बेचना वो हमारे पास से वो लोग ज़बरदस्ती करके अपने रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल दे टेक कॉटन, लेनिन, वी फाइंड डिफरेंट वूल्स, सिल्क, एवरीथिंग वॉज बीन टेकन अप बाई देम एंड taken to their land, that is in Britain. And that time this was the major factor where our businessmen also started losing their, we can say, competitive power. वो उन लोग का पावर कम हो गया, उन लोग का एक्सपोर्ट कम हो गया और प्रोडक्शन भी कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिशर्स. So you have to remember this all which all been happening, which you already studied in history. This is on the basis of economically how we are lacking and why we are under poverty because of them. So this was the thing which we find. So you need to go with that. Again, small and cottage industries थे हमारे जो छोटे छोटे businessmen थे, they were also ruined. क्यों? Because they were not allowed to use the made in India product, but they were made to use the made in Britain or made in Manchester product. तो वो चीज़ वहाँ पे कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि दे वर इन द रूल. सो वी वर एक्सप्लॉयटेड मोर एंड मोर टू परचेज, और वी वर बीन अंडर प्रेशर टू परचेज ऑल दैट पर्टिकुलर. एंड द स्मॉल एंड द कॉटेज इंडस्ट्रीज are suffering due to losses due to that particular policy of industrialization. Then lastly what happened, बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दी, बहुत सारे लोगों ने बिजनेस बंद कर दिया, एंड मैनी ऑफ देम वर द अनएम्प्लॉयड. एंड उन लोगों को लेबर का जॉब करना पड़ा और दे आर नॉट एबल टू पे, दे वर बीन बीटन, एवरीथिंग वॉज बीन डन. एंड दिस इज वाई यू फाइंड दैट पॉवर्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग. हमारे यहाँ पे गरीबी थी, कम थी, लेकिन उन लोग के आने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत बहुत बहुत. फर्स्ट द फार्मर्स वर बीन एक्सप्लॉयटेड, देन द ट्रेडिंग एक्टिविटी इन दैट बिग बिजनेसमैन, एंड लास्टली द स्मॉल and the cottage industry persons were being ruined and exploited. And because of that we find that majority of people were being made slaves and they are unemployed under this particular British rule. And because of their own trade policy, industrial policy, and their goods which were being sold in India, we find that we lose our production, our identity, everything because of this Britishers. So this was a major fall or major down, we can say, where we find that the first poverty started because of this Britishers, Dutch and French, which came into existence and started ruling our country. I hope you have been understanding that, and I have highlighted many of the words which you find that you need to remember in this particular points. So if you find any difficulty, any doubt again in this particular thing, you just call or message me. If you find any other topic to know, just message me, so I will explain you. Previous topic अगर कोई समझ नहीं आया तो आप मेरे को फ़ोन मैसेज कर सकते हो. So next class we'll start with a different topic. So we have already completed this particular thing. Next class we'll start with causes of rural poverty. So in that we are having 2 points that we will cover.